Yes, I'm audible to everyone. Yes, sir. Okay. Yes, is my screen visible now? Yes, sir. So, good morning to everyone. Now we will be talking about the further, about the memory organization. Yesterday we have started with the memory organization. We have seen the internal RAM. Yes. So we have started with our explanation with this internal RAM. I have told you. So just quickly we will go with the revision of this. So if you talk about the internal RAM, you know the size of internal RAM is, it is how much? Size of internal RAM is how much? What is the size of internal RAM? If I'm asking you the question, I want quick answer. Yes. इंटरनल रैम का साइज कितना है 8051 में? 4K. 128 byte. 128 बाइट. 128 byte 4K. You are talking about on chip program memory. I'm asking you about the internal RAM. So on chip data memory is of 128 bytes. So when you talk about the 128 bytes, mostly to address this 128 bytes we have to use how many address lines or how many address bits? To address this 128 bytes, how many address bits we have to use? 2 to the power of, मैंने बताया था आपको. Yes. How much address lines we have to use? 8051 has 16 address lines. Out of these 16 address lines, how many address lines or how many address bits we have to use to access this 128 internal RAM? 128 byte of internal RAM. 655. Yes? Louder? Yes, you may be Six right, you five may be five three. wrong. हाँ, जोर से बोलो. Yes. 65536. My question is simple. Again, I am repeating to address 128 byte of internal RAM. How many address bits are required? 16 bit. 16 bit is a wrong answer. 16 bit is a wrong answer. Okay, you tell me to address this 128 byte of internal RAM, your starting address and your ending address. So 8 bit. Yes, yes. I won't be continuing in this manner. If you do not answer, I have to start with from the scratch. It means you are not revising, it means you are not understanding what I am teaching. It shows that the screen is visible to everyone, everything is on the screen. I am asking you the question, I am expecting the answer. You are not giving me the answers, the correct answer. सर 0000 00h से स्टार्ट होगा हाँ, Ref, जीरो ref, जीरो ref, एच ref. से. एंड हाँ, खत्म एंड कहाँ पे एट होगा? 7fh. 7FH पे खत्म होगा. यस. तो 00H से स्टार्ट होगा, 7FH पे खत्म होगा. तो हम कितने मेमोरी साइज को एड्रेस कर रहे हैं फ्रॉम 00H टू 7FH? 128 bytes. वेरी गुड. हाँ, 128 बाइट्स. 128 बाइट्स. Now this 00H to 7FH, these are in hexadecimal. These are in hexadecimal. If I have to convert into bits, 00 can be written as, or 00H can be written as 00H can be written as. 0 bit. 4 times. 80. 8, हाँ 8 हाँ. zeros. 8 times zeros. That's 8 times zeros.
वेरी गुड, 8 टाइम्स zeros. So 8 times 0 से लेके 7FH. 7FH, how do you write down in the bits 8 or in the 11. binary? 8 ones. 8 ones. Yes. 0 1 8 1 times. and then 4 ones. यस, किसी ने तो बोला है 7 कैसे लिखेंगे? 0 1 1. 0. Yes, you are right. बोलो. How do you write down 0 1 7? 1 1. Zero Sir, triple one. हाँ, triple one, sir. 0 0 triple triple one. one. 0 triple And one. then 4 times 1. Very And good. then 4 Then times. 4 Yes, sir. times 1. So this 7F can be written as 0 1 1 1, and F can be written as 1 1 1 1. Similarly, this 0 can be 0 0 can be written as 0 0 0 0, and the remaining 0 can be written as 0 0 0 0. So tell me now, how many bits are dedicated, or how many address bits, address lines are dedicated? Total number of address lines. Yes. Now my question is clear. How many address lines are dedicated to to Two access your address one? lines. Yes. 8 address bits. Yes, 8 address lines or 8 bits. Tell me 2 to the power of 8 is equals to how much? 256 bytes. 256 bytes. ये 256 बाइट्स में से 128 बाइट्स 128 बाइट्स इंटरनल रैम के लिए यूज कर रहे हैं हम, इंटरनल रैम के लिए यूज कर रहे हैं. सो 128 बोले तो यहां से लेके यहां तक 128 बाइट्स, 128 बाइट्स. और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग इसका आधा 128, बिकॉज 128 बाइट प्लस 128 बाइट गिव्स यू 256 बाइट्स. So 250, तो remaining 128 byte क्या है? ये remaining 128 byte it is used for SFR. very good SFRs. लेकिन यहाँ पे है ना, do not confusion में, do not have any confusion here now. You only have internal RAM of 128 bytes. You only have internal RAM of 128 bytes. So this is not the part of internal RAM. This is not the part of internal RAM. This is your special function registers, which are stored at which are stored from 80H to FFH. बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं. Okay. So if the question is asked, or Viva question is asked, whether SFR is the part of your internal RAM, no, you will say no, it is not part of the internal RAM. But by using this 8-bit of address, using 8-bit of address, I can go from 0 0 0 0 0 0 0 0 to 1 1 1 1 1 1 1 1. ओके. तो ये 1 1 1 बोले तो ये FFH, और ये 0 0 0 बोले तो 0 0 H. तो स्टार्टिंग एड्रेस 0 0 H से लेके FFH. तो हम 256 बाइट को एड्रेस कर रहे, 256 बाइट्स को एड्रेस करें, दैट इज 00H टू FFH. लेकिन इसमें से ओनली 128, इसमें से ओनली 128 बाइट्स आर यूज्ड. जस्ट अ मिनट. So from this only 128 bytes are used. So remaining 128 bytes is used for special function register, which is not part of the internal RAM. Is it clear now? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये चीज मैंने यहाँ पे भी दिखाया था. एक मिनट. This thing, let me show you on the block diagram. This thing, let me show you on the block diagram, then it will be more clear. See, I am going very slowly. नहीं समझ में आ रहा तो you are not asking me the questions. If I am asking you the questions, you are not answering. I don't understand. You are not revising. You are not answering my questions. You are not putting some questions on me. So I was talking about this. Sir, can you record the lecture? I think I have started recording.
वो अभी Google doesn't have the option to record, so I have gone with the Google Chrome extension. So with that, I'm able to record this. Okay. Yes, see here now. See here, all of you. What do you see here? You have 128 byte of internal RAM. Can you see here? SFRs is different. SFRs are different. So it is not part of your internal RAM. So 128 bytes are dedicated for internal RAM. SFRs are not the part of internal RAM. To access these special function registers, we are in the continuation of the addresses from 80H to FFH. Shall I proceed further now? If you don't have any questions? Yes? Shall I proceed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So So we have talked about the internal RAM. Okay. So internal RAM के बारे में मैंने बताया register bank 0, register bank 1, 2, 3, bit addressable area. I have told you the bit addressable area also in detail. मैंने बताया था bit addressable area. ये देखो. I have shown the bit addressable area also. Yes, this is your bit addressable area. This is your bit addressable area. So this is a bit addressable RAM starting from 20H to 2FH. You should know this by heart. Starting address, ending address of the bit addressable RAM, or in that case any of the thing, general purpose RAM or SFRs. Okay, so this internal RAM is this. It is called as a bit addressable. That means that thing also I have explained you. So your byte address is this, and if you want to have the internal, अगर आपको internally कुछ bit को change करना है, then we have an option because it is a bit addressable. अगर ये पर्टिकुलर बिट को मुझे सपोज चेंज करना है तो इसका एड्रेस क्या है 6C. ओके, अगर सपोज ये बिट को चेंज करना है तो इसका एड्रेस क्या है 51. उसका एड्रेस है 51. ओके, so and so forth. Okay, so bit addressable, individual bit I can change. If it is a byte addressable, I have to change all the 8 bits. Okay, that is the difference between the byte address or the bit addressable and byte addressable. Okay, so byte address ये पर्टिकुलर बाइट का एड्रेस बताता है और बीट एड्रेस हर एक इंडिविजुअल का एड्रेस बताता है. ओके, so that is the main difference between byte address and bit address. Then okay, so you have a register bank, then you have bit addressable RAM, then you have a general purpose RAM, the starting address and the ending address. So general purpose RAM is used to store the data temporarily. It is for general purpose. It is for general purpose. Okay, so remember the size, that is 30H to 7FH. 30H to 7FH. और उसके ऊपर यू हैव 80H से लेके FFH. तो आपका इंटरनल रैम इधर ही खत्म हो गया. 7F पे आपका इंटरनल रैम खत्म हो गया. उसके बाद 80H से लेके FFH यू हैव स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. यू हैव स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. ओके, यू हैव स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. सो दिस इज द about the internal RAM now. This is about the internal RAM. Now we can proceed further. Any question? Any question? No, sir. Okay. So now we are proceeding towards, yes, now we are proceeding towards the SFRs. So SFRs are important. These are called as special function registers. As the name suggests, they are used for some special function. They are used for some special function. Okay, so we will start with our explanation about the special function register. Now you have to have a keen observation. Your special function registers is starting from 80H to FFH. 80H to FFH. Okay, just a minute.
Yes, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So we are talking about the special function registers. So this special function register is actually, the name suggests that this is used for some specific application, or it has some special function. Okay, special function. So this special function register, if you see carefully, can I if now if I ask you how much memory size is consumed by special function registers, what is your answer? How much is the memory size which is consumed by the special function registers? Tell me the memory size. 128 bytes. 128. Yes, it is 128 bytes. It is 128 bytes. Now if you see carefully, all 128 bytes are not utilized. All 128 bytes are not utilized. Out of this 128, if you see carefully, you only have 21 SFRs. You only have 21 special function registers. Okay, so 21 कौन से है? This 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So only 21 special function registers you have. And if you see carefully, this 21 special function register consumes 1 byte each. Consumes 1 byte each. Do you agree with this? It consumes 1 byte each. Do you agree with this? Yes, sir. Yes. Okay. इसका मतलब क्या है? It consumes 1 byte each. यानी हर एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर is of the size of 8 bit. They are the size of 8 bit each. Am I right? Am I right? Yes, sir. Okay. So these 21 special function registers can be categorized into मैं इस पे डायरेक्टली दिखाता हूँ. They are categorized into, see the categories now. Yes, they are categorized into, see here now, match registers, status registers, program counter, pointer registers, input output port latch, peripheral data register, peripheral control register. So these are the categories of in which your special function registers are categorized. Okay, so match register contains A register and B register. Status register contains PSW, that is a program status word. Program counter contains PC as a special function register. Your pointer register contains DPTR as well as SP. DPTR stands for data pointer and SP stands for stack pointer. So under the pointer register, you have two special function register, DPTR and SP. Under the input output port latch, you have four registers, special function register, P0, P1, P2 and P3. Under the peripheral data register, you have TL0, TH0, TL1, TH1, SBUF. And under the peripheral control register, you have IP, IE, TMOD, TCON, SCON and PCON. Okay, so you have to remember 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 categories in which your 21 SFRs are distributed. Okay, we have to understand this one by one. We have to understand this one by one. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, so 21 special function registers we are going to see. We are going to see which are important right now, और बाकी के जो मॉड्यूल्स है उसमें उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है. ओके, उसमें उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन है. सो वी विल सी वन बाय वन. वी विल सी वन बाय. Now when you talk about the first
match register, MATHS, match register. In this match register you have two, that is A and B. You have two A and B. So this A, कल ही हमने लैब लिया है. ओके, कल ही हमने लैब लिया है, in which we have written the program of addition. In that addition program, if you see carefully, I have used the register A, that is accumulator. So A is called as accumulator. If I ask you, tell me the size of accumulator or tell me the size of A register, your answer is 1 byte. 1 byte. Yes, your answer is 1 byte, और या फिर आप बोल सकते हो 8 bits. Okay, now what is the significance of A? Whenever you do addition, whenever you do multiplication, whenever you do any arithmetic operation or logical operation, one of the operand is taken as A. One of the operand is taken as A. Okay, for example, if I want to add two numbers, you can take one operand in A and other operand you can take in B, or the register R0 or R1. If you are doing the multiplication, okay, if I want to add, suppose 11 multiplied by suppose 12, for example. Okay, so 11 or 1 will be stored in accumulator, and 1 2 has to be stored in B compulsorily. Why? Because to carry out the multiplication, you have a standard command, that is MUL AB. ये जो कमांड है ना, ये अभी हम लेने वाले हैं. कल मैंने एडिशन का लिया था, तो आई विल बी शोइंग यू सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तब आपको पता चलेगा वी हैव टू कंपल्सरीली टेक द कमांड or syntax MULAB. So 11 will be stored in A, 12 will be stored in B, and if you do MULAB, that means multiply 11 by 12. That is the meaning. Similarly, if I have to do the division, there also compulsorily we have to take DIVAB. Okay, it means A divided by B. It means A divided by B. Okay, so अगर मैं एक नंबर 11 ले रहा हूँ और दूसरा नंबर B में ले रहा हूँ, तो it is nothing but 11 by 12. I am giving you just an example. So इसका मतलब ये भी होता है कि I cannot take MUL AR0. No, this gives you a syntax error. अगर मैंने R0 में 12 लिया और A में 11 लिया और मैंने MUL AR0 लिखा, तो it gives you a syntax error. Same thing, if you write down DIV AR0, it also gives you syntax error. So always remember, always when you do multiplication, the syntax is MULAB, and whenever you do the division, the syntax is DIVAB. दूसरी बात, you know that A holds 8 bit, you know B also holds 8 bit. Sometimes if you do the multiplication and if you get the answer more than 8 bit, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम MULAB करते हैं, then if the result is more than 8 bit, so when the result is more than 8 bit, what is going to happen? Your higher order byte of the result will be stored in B. ये याद रखना, will be stored in B. And what about the lower byte? अब lower byte का क्या मतलब है, higher byte का क्या मतलब है? So when you talk about the lower byte, suppose मैं 11 by 12 कर रहा हूँ, ये मेरे हेक्साडेसिमल नंबर है. ओके, और मुझे एक रिजल्ट मिला है और वो मैं बाइनरी में लिखता हूँ. सपोज मुझे रिजल्ट मिल रहा है 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, तो इतना बड़ा मुझे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आई एम गेटिंग सच अ ह्यूज नंबर.
So can you see here how many bits are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I am getting the result which is of 16. Now whenever you do MUL AB, your lower order result, this is called as a lower byte. This is called as a lower byte, and this is called as a higher byte. So your lower byte result will be stored in the accumulator, and higher byte result will be stored in B. This is by default. This is by default. This is by default. Similarly, if I am doing the division, in this division, if you see carefully, you have in the division process, you will be getting the result in the form of remainder, and you will get the divisor. Okay, you will get the divisor. Now whenever you are doing the division operation, okay, whenever you do the division operation, this remainder will be, sorry, don't talk about the divisor right now. Whenever you do the division of a by b, now this a by b operation अगर हम जब करते हैं, this is used to store, you will have the result in the form of remainder and the quotient. Okay, so the quotient will be stored remainder and the quotient. So this result, which is in the form of remainder and the quotient, remainder will be stored in the B register by default, and the quotient will be stored in the A register by default. So again I am repeating, whenever you do the multiplication, you are using the command mulab. In the multiplication process, if your answer is greater than 8 bit, that means you have lower 8 bit and you have higher 8 bit. So the lower 8 bit will be your lower 8 bit will be saved in A register, and your higher order result will be stored in B register. Whenever you do the division, you have to use the syntax div ab. In this, the answer generated will be in the form of remainder and the quotient. So by default, remainder will be stored in B and your quotient will be stored in A. I hope you have understood this. Yes, sir. If you have any question, please ask. सर वो मल्टीप्लिकेशन वाला एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, अभी जब हम प्रोग्राम भी करेंगे ना, एक्चुअली आपको पता है कि हमको बाय डिफॉल्ट MUL AB ही लिखना पड़ता है. मैंने आपको पहले बताया था कि आई कैन नॉट राइट डाउन MUL AR0, ये सिंटैक्स एरर बताता है. तो वी हैव टू गो विथ MUL AB. तो सर बीए भी सपोज, नहीं, क्या बोले? बीए भी नहीं चलेगा? नहीं, BA भी नहीं चलेगा, नहीं, ये भी नहीं चलेगा. ये आपका स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, आप वो चेंज भी नहीं कर सकते हो, ओके, सो यू कैन नॉट डू दैट. सो हम जब MUL AB करते हैं ना, तो आपको पता है A का कैरिंग कैपेसिटी है 8 बिट, B का भी कैरिंग कैपेसिटी है 8 बिट. सो कैन आई से multiplication of two 8-bit numbers? Can I comment multiplication of two 8-bit numbers? Yes or no? Multiplication of two 8-bit numbers, can I say? Yes, sir. Yes. So whenever you do the multiplication of two 8-bit numbers, it might happen that result may be greater than 8 bit. The result may be greater than 8 bit. So in that case, we have to identify lower byte, lower 8 bit, and higher byte या फिर higher 8 bit. So here lower 8 bit is this, and higher 8 bit is this, the result. So lower 8 bit will be stored by default in A register, and higher 8 bit will be stored in B register. That is a mean. Now understood? Yes, sir. Okay. Any more questions?
Any more questions? No, sir. Okay. तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ए का सिग्निफिकेंस क्या है, बी का सिग्निफिकेंस क्या है, ये याद में रखना. ए को एक्यूमुलेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इफ यू डू एडिशन, इफ यू डू सब्ट्रैक्शन, if you do multiplication, if you do division, by default your result will be stored in the A register. That means it is going to accumulate the result. It is going to accumulate the result. That is why it is called as accumulator. That is why it is called as accumulator. ओके. अगर हम जब एडिशन भी करते हैं तो एडिशन के लिए आपने कल क्या देखा था? ADD A,R0. आप A,R0 लिख सकते हो एडिशन के लिए. आप एडिशन के लिए A,B भी लिख सकते हो, ये आप कर सकते हो. लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए MULAB, डिवीजन के लिए DIVAB. ओके. तो आप जब यहाँ पे एडिशन करते हो ADD A,R0, तो बाय डिफॉल्ट जो भी आंसर आएगा वो A में स्टोर हो जाएगा. और आप अगर ADD A,B कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर A में आ जाता है. इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी एडिशन करते हो तो वन ऑपरेंड हैज टू बी टेकन एज ए. इसका मतलब सपोज मुझे 11 + 12 करना है, तो बाय डिफॉल्ट 11 या फिर 12 ए रजिस्टर में स्टोर होना चाहिए. बाय डिफॉल्ट आपको लेना ही पड़ता है, एक ऑपरेंड ए एक्यूमुलेटर में लेना ही पड़ता है. सो दैट मीन्स आई कैन नॉट हैव दिस इंस्ट्रक्शन ADD R0, R1. ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. दिस गिव्स यू अ सिंटेक्स एरर. तो हम जब प्रैक्टिकल में जब ये हम ये करके देखेंगे ADD R0, R1 ये एग्जीक्यूट होता है कि वी विल जस्ट सी. ओके. तो हमेशा आपका एक ऑपरेंड ए में होना चाहिए, सो दैट द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर. इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, sir. एनी Yes, sir. क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके. सो वी हैव टॉक अबाउट द मैच रजिस्टर. इसलिए इसको मैच रजिस्टर कहा जाता है क्योंकि वी कैन डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर लॉजिकल ऑपरेशन बाय टेकिंग द ऑपरेंड्स इन ए रजिस्टर and B register. Okay, that is why they are called as match register. Proceed further. Status register PSW. Status register PSW. So in the status register PSW, we have the register name as PSW. Okay, so it is called as a program status word. It is called as a program status word. Okay, so what is this program status word? We will see now. So program status word is also of 8 bit. ओके. तो उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ ए कहाँ पे है और बी कहाँ पे है. यस. if I ask you where is, tell me the address of A register, what is your answer? If I ask you, tell me the address of A register, what is your answer? E0H. Very good. Your accumulator register is at the address location E0H. Similarly for B, it is at address location F0H. और दोनों के सामने एस्ट्रिक है, दैट मीन्स दे आर बीट एड्रेसेबल. उसके इंडिविजुअल बिट्स को हम चेंज कर सकते हैं. ए रजिस्टर 8 बिट का है, तो 8 बिट में से हम किसी भी एक रजिस्टर को चेंज कर सकते हैं. दैट इज अ मीनिंग. ओके, किसी भी इसको हम चेंज कर सकते. दैट इज व्हाई देयर इज एन एस्ट्रिक. सो एस्ट्रिक मीन्स इट इज अ बीट एड्रेसेबल. ओके. So we have done with the B register, we have done with the A register. Now we are proceeding to understand the PSW. So PSW is at the memory location D0H. ये सब आपको बाय हार्ट करना है, ये सब आपको बाय हार्ट करना है कि कौन सा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कौन से एड्रेस पे है. So PSW is also it is a bit addressable. Okay, so let's see what is this PSW. PSW stands for program status word. Program status word. So as I have told you, so we will directly see what is the PSW.
Yes, see here now, PSW. Now when I'm talking about the PSW, this gives you it reflects the status of the result. It reflects the status of the result. Okay, so I will go one by one to make you understand what is this status of the result. For for example, I am adding two 8 बिट नंबर्स जो हमने कल प्रैक्टिकल में किया है. ओके, कल हमने कौन से दो नंबर लिए थे? कल हमने कौन से दो नंबर लिए थे? कल प्रैक्टिकल में हमने एडिशन किया था, उसमें दो नंबर कौन से लिए थे जो हमने ऐड किए थे? 20H and 10H. हाँ, सो सी आर ऑल ऑफ यू, 20H एंड 10H को मैंने ऐड किया था. आई हैव गॉट द आंसर एज 30H. 20H इज टेकन इन ए रजिस्टर. 10H हमने कहा कौन से रजिस्टर में लिया था? R0. वेरी गुड, R0. ए का साइज 8 बिट, R0 का साइज भी 8 बिट. सो बट 20H इज इन हेक्साडेसिमल. आई वांट द रिप्रेजेंटेशन इन द बाइनरी. So 0 will become 0 0 0 0 and 2 will become 0 1 0 0. Do you agree with this? Do you agree with this? Yes. Yes. Similarly, 1 0 can be written as 0 0 0 1 and this 0 can be written as 0 0 0 0. Do you agree with this? Yes, sir. Yes. All of you pay attention now. So whenever you do this is in binary. So I can write down this B, this B. जैसे यहाँ पे H लिखा है. To identify that the number is in hexadecimal, I can write down here B to identify that this is a binary number representation or binary number. Now when you do the addition, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0. So 0 0 1 1 0 0 0 0. This is in binary. What is the hexadecimal number? What is the hexadecimal number? 38. 30H. Yes, 30H. Now try to understand what I am doing now. I am just drawing a single line from here. A single line from here. All of you pay attention. Suppose I am doing the addition of two 8-bit numbers. If I am doing the addition of two 8-bit numbers and there is a carry generated. Abhi, this is applicable for addition as well as this is applicable for the subtraction. अगर मैं addition बोलूंगा तो I will say carry. If I talk about the subtraction, I will say borrow. Okay, now if the carry is generated from the, now this is 0th bit, this is first bit, this is second bit, this is third bit. Now if the carry is generated from third bit कौन सा है आपका? ये वाला है. अगर यहाँ से carry generate होता है, ओके, यहाँ से carry generate होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके अगर थर्ड बिट पे आपको 1 1 है तो आपको दोनों को ऐड करना है. तो 1 plus 1 is 0 and carry generated. सो अगर थर्ड बीट से अगर कैरी जनरेट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सिलरी कैरी. दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सिलरी कैरी. ओके, एंड इफ सपोज सेवेंथ बीट से कैरी जनरेट हो रहा है, सेवेंथ बीट से अगर कैरी जनरेट हो रहा है, सपोज सेवेंथ बीट पे है सपोज 1 1, तो 1 1 1 plus 1 is 0, कैरी 1, तो कैरी जनरेट हुआ यहाँ पे. तो अगर सेवेंथ बीट से कैरी जनरेट हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन अगर कर रहे हैं हम, और अगर सेवेंथ बीट से आपका बोरो जनरेट हो रहा है, in both of the cases, then you will say that is simple carry or it is called as a borrow. तो कैरी और बोरो को एक कॉमन हमने वर्ड दिया है कैरी, विच इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन एज वेल एज इट इज एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन. और अगर थर्ड बिट से जनरेट होता है तो इट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सिलरी कैरी. सो यू हैव टू टर्म्स C and AC. So AC means auxiliary carry, the carry or the borrow generated from the third bit. Carry is the if the carry is generated from the seventh bit, it is called as a carry, or if it is a subtraction, it is called as a borrow. Okay, so C and AC.
तो हम अगर कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं और अगर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा है तो AC विल बिकम 1। और अगर हम कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर 7 बीट से अगर कैरी जनरेट हो रहा है देन दिस C विल बी 1। नाउ इफ दिस C इज इक्वल्स टू 1 एंड इफ ऑक्सिलरी कैरी इज इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब है? सी or ना? कैन यू सी द PSW word? It is of 8 bit. Can you identify the bit? Zeroth bit, zeroth bit, first bit, second bit, third bit, fourth bit, fifth bit, sixth bit and seventh bit. ये आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का रजिस्टर है विच इज ऑफ 8 bit. In this 8 bit register, your first zeroth bit is P. First bit is not defined. Second bit is overflow. मैं ये भी बताता हूँ व्हाट इज P. P stands for parity bit. सेकेंड बीट पे आपका क्या है? OV है, दैट इज ओवरफ्लो. थर्ड बीट पे आपका क्या है? RS0 RS1, इसको मैं अलग से लूंगा. फिफ्थ बीट पे क्या है? F0 फ्लैग 0, इसको भी मैं अलग से लूंगा. इफ यू सी केयरफुली, सिक्स्थ और सेवंथ बीट, सिक्स्थ बीट इज ऑक्सिलरी कैरी एंड सेवंथ बीट इज कैरी. CY मीन्स कैरी. तो अगर मेरे एडिशन में करते समय अगर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा है, यानी थर्ड बीट से अगर कैरी जनरेट हो रहा है, तो आपके ये जो PSW का जो रजिस्टर है इसमें सिक्स बीट ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है. सिक्स बीट आपका ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है. और अगर ऑपरेशन करते समय अगर सेवंथ बीट से कैरी जनरेट हो रहा है तो आपका कैरी बीट 1 हो जाता है. अगर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो सिक्स बीट आपका 0 हो जाता है. और अगर कैरी सेवंथ बीट से अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो आपका ये सेवंथ बीट वो 0 हो जाता है. सो कैन आई कमेंट कि जो भी रिजल्ट आपका आता है दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द PSW, दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द PSW. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्लैग. फ्लैग वो बताता है. जैसे ग्रीन फ्लैग का मतलब है आप जा सकते हो, रेड फ्लैग का मतलब है आपको रुकना है. सो हियर यू हैव, अगर ऑपरेशन करते समय कैरी जनरेट हुआ तो कैरी फ्लैग विल बिकम 1. अगर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बिकम 1. तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ऑपरेशन में कैरी फ्लैग जनरेट हुआ है, ऑपरेशन में कैरी फ्लैग जनरेट हुआ. सो दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड हियर, दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड हियर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. एनी क्वेश्चन? एम ऑडिबल? Yes. किसी को Yes, डाउट sir. है? किसी को डाउट है? यस और नो? No, sir. Okay. So we have talked about the two bits carry flag and auxiliary flag. Now I will explain you about the parity flag. Parity flag. Parity flag is at the zeroth bit. ये आपका PSW है ना रजिस्टर, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है. तो आपको याद रखना है जीरोथ बीट पे P है, फर्स्ट बीट पे अनडिफाइंड है, सेकेंड बीट पे ओवरफ्लो फ्लैग है OV, थर्ड और फोर्थ पे RS0 और RS1 है, ये आपको मैं बताऊंगा. फिफ्थ बिट पे F0 है, सिक्स बिट पे ऑक्सिलरी कैरी है फ्लैग, और सेवंथ बिट पे आपका कैरी फ्लैग. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू पैरिटी फ्लैग. पैरिटी फ्लैग क्या है? पैरिटी फ्लैग, सी आर नाउ, आपने ये दो दो नंबर को ऐड किया 20 और 10. आपका रिजल्ट अगर आप देखोगे, मैं पूछूंगा कि ये रिजल्ट इवन पैरिटी है या फिर ऑड पैरिटी है. व्हाट इज योर आंसर? Even. Even. even parity, क्योंकि इसमें number of ones are 2, so 2 means it is even, so this is even parity. So whenever you have even parity, whenever the even parity is generated, whenever the even parity is generated, please pay attention what I'm talking about. Whenever your even parity is generated, it means the how it is getting reflected in the PSW, then that flag will be 0, then that flag will be 0. So here ये parity flag जो है, this flag will become 0.
जीरो कब? जब आपके रिजल्ट में इवन पैरिटी दिखता है, जब आपके रिजल्ट में इवन पैरिटी दिखता है। और आपके रिजल्ट में अगर ऑड पैरिटी दिख रहा है, 3 number of ones, 5 number of ones, 7 number of ones, then this flag will be 1, which shows the result has odd parity. I hope you have understood this. I hope you have understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. So this is called as even parity and odd parity. अगर रिजल्ट इवन आ रहा है तो आपके प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW में 0th बिट विल बी सेट टू 0, और आपके रिजल्ट आपका अगर ऑड पैरिटी दिखा रहा है तो PSW का जो 0th बिट है, दैट इज अ पैरिटी बिग, दैट फ्लैग विल बी सेट टू 1. Okay. Similarly, come back to the result now here. Now in this operation, if it happens that you are getting the carry 7th bit, that means that 1 has to be accommodated. तो आपका ये जो है 8 बिट तो 8 बिट तो आपका रिजल्ट है, लेकिन अगर ये 1 रहता, ये 1 रहता, तो 1 + 1 is 0, carry 1. So uh, to uh, to store this one, to store this one, to accumulate this one, actually you require you have the answer which is of 9 bits, which is of 9 bits, which is of 9 bits. That means 8 bits will be stored in the accumulator, but there is addition of 1 bit, that is a 9 bit. So this is called as overflow. This is called as overflow. जब मैं दो 8 बिट को ऐड कर रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर, द रिजल्ट ऑफ 8 बिट, but because of the carry generated from the 7th bit, your answer exceeds 8 bit, it becomes 9 bit. That means there is overflow. So whenever there is an overflow, this flag will be set to 1. This flag will be set to 1. This flag will be set to 1, which indicates there is an overflow. Which indicates there is an overflow. ओके. अभी ये भी एक रीजन है जब ओवरफ्लो फ्लैग 1 होता है. दूसरा एक रीजन है साइन नंबर. आपको बताया था मैंने साइन नंबर व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट. इन द DSD में हमने देखा वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट. ओके. नाउ व्हेनेवर यू टॉक अबाउट दिस sign number, whenever your MSB is 1, that means the result, that means the answer is negative. And whenever you have MSB is equals to 0, then the result is positive. Okay. So that MSB, actually that MSB is nothing but your 9th bit. MSB is nothing but your 9th bit. I'm talking about sign number. So if the 9th bit is 1, that means that answer is negative. If that 9th bit is 0, that means your answer is positive. तो वो 9th बिट भी अगर हम यूज कर रहे हो, that means in that case also your overflow flag will be set to 1. I hope you have understood this. I hope you have understood this. Yes, sir. Yes, sir. Any question? Sir, then what is the difference between overflow flag and the carry flag? Because both are working both are working in same manner, na? No, both are not working in the same manner. You have a good question. Whenever you do the addition, if the carry, when the 7th bit gives you carry, this has to be 1. And whenever you have an overflow or whenever you are using the sign number, that time this will be 1. दिस विल बी 1. हाँ, यू कैन से कि जब ओवरफ्लो होता है तब कैरी फ्लैग भी 1 होता है और ओवरफ्लो फ्लैग भी 1 होता है. यस, यू कैन कमेंट इन दैट वे. यू कैन कमेंट इन दैट वे. लेकिन अगर अगर हम व्हेन वी आर डीलिंग विद द साइंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ओके, इन दैट केस अगर 8 बिट से अगर हम 9 बिट की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स आउट ऑफ रेंज. आपको पता है हर एक रजिस्टर 8 बिट को ही स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट मोर देन दैट है, अगर आउट ऑफ रेंज आ रहा है, तो दैट विल बी शोन इन द ओवरफ्लो फ्लैग. दैट विल बी शोन इन द ओवरफ्लो फ्लैग. ओके. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि ओवरफ्लो फ्लैग कैरी बीट और ओवरफ्लो फ्लैग दोनों एट अ टाइम 1 होते हैं. दैट इज आल्सो पॉसिबल. लेकिन हम जब साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं जिसमें रिजल्ट आपका पॉजिटिव या निगेटिव आता है, तो इन दैट केस MSB इज टेकन, विल बी सीन whether the result is negative or positive. In that case your 9th bit is 1. If it is 1, then that means the result is negative.
If your ninth bit is 0, then it is even number. Okay, so that वो दिखाने के लिए भी the overflow flag will be set to 1. Is it clear? Yes, sir. Any more सर questions? सर हाँ, सर एक बार वापस साइन अरिथमेटिक नंबर एक्सप्लेन कर दो. साइन अरिथमेटिक नंबर. ओके, मैंने आपको इन द डीएसडी मैंने आपको बताया था, वेन एवर यू टॉक अबाउट द एडिशन और इफ यू आर हैविंग द टूस कॉम्प्लीमेंट, ओके, इफ आई एम डूइंग सम एडिशन ऑफ द साइन नंबर्स, साइन एंड अनसाइन नंबर्स मैंने आपको बताया था. इफ आई एम हैविंग दिस नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ओके, एंड इफ दिस इज अ साइन नंबर, अब ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, सो दिस नंबर पॉजिटिव है क्या निगेटिव है. ओके, नाउ दिस 4 zeros इज नथिंग बट 0, एंड दिस 0 1 1 1, दिस इज व्हाट 0 1 1 1. सो 1 2 4 8 12 13 14. ओके, सो wait, 1 2 4 8 12 13 14. सो 14 इन हेक्साडेसिमल कैसे लिखते हो? 14 इन हेक्साडेसिमल, 14 इन हेक्साडेसिमल. E? ई बराबर है. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. so your answer, if you have this E0H, E0H, but here if you see here, this is a sign number which is shown by the MSB bit. Okay, if it is 1, that means this is minus E0, this is minus E0, and if this bit is 0, that means it is plus E0. So under the sign number, the MSB, the ninth bit we have to consider. तो अगर दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, and if I am getting the answer as a negative, ओके, ये एक साइन नंबर मैंने आपको दिखाया निगेटिव में. ओके, इफ आई एम डूइंग सम अदर नंबर, okay, which is also in the negative, so if I am adding them and if I am getting the answer of a negative number, then the MSB has to be shown by that one number, and your answer will be of 8 bit. So this answer is of 8 bit, but this MSB under the sign number, this shows whether your answer is negative or positive. So this number which is a ninth bit, MSB which is of a 9 bit, अगर ये 9 bit नेगेटिव आ रहा है या फिर हम साइन नंबर यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल द टाइम योर ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1, योर ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1. ओके, सो कैरी फ्लैग जब आता है तब ओवरफ्लो फ्लैग भी होता है. बट if I am dealing with the signed arithmetic operations where I have to deal with the MSB ninth bit, if it is 1 negative, if it is 0 positive, in that case also your overflow flag will set to 1, your overflow flag will set to 1. अभी समझा आपको? Yes, sir. हाँ, तो साइन नंबर में भी हमको ओवरफ्लो फ्लैग का यूज होता है. वो दिखाता है कि आपका साइन नंबर, दैट मीन्स योर MSB यू आर डीलिंग विथ is more, it is a ninth bit, it is a 9 bit. Okay, so that time also your overflow flag will be set to 1. Okay, so that is the way. Now here I was talking about, so I have explained you the parity bit, parity flag, overflow flag, auxiliary carry flag, and carry flag. Now we will be talking about this RS0 and RS1. This is also important, please pay attention. So whenever you talk about this RS0 and RS1, what is RS0 and RS1? See here, see the table. Carry flag मैंने अभी आपको explain किया, 7th bit used in arithmetic, logic and boolean operation. Auxiliary carry मैंने आपको explain किया, 6th bit. Auxiliary carry useful only for BCD arithmetic operation. F0 I am going to explain you. See this RS0 and RS1, that is 3rd bit and 4th bit. This is used to select your register bank. How many register bank you have? How many register bank you have? 4. 4. By default you are dealing with which register bank? By default RS0. RS0. Yes, sorry, you should say register bank 0. Yes or no?
register bank 0 by Yes, default? sir. Yes. So other than register bank 0, अगर मुझे दूसरी बैंक यूज करनी है, register bank 1, register bank 2 and register bank 3, that can be selected by these bits rs0 and rs1. What is rs0 and rs1? Register bank selection bit. Register bank selection bit. Okay, register bank selection bit. So rs0 and rs1, when both are 0 0, you are selecting register bank 0. When rs0 is 1 and rs1 is 0, you are selecting bank 1. When your rs0 is equals to 0 and rs1 is equals to 1, you are selecting bank 2. And when both the rs0 and rs1 are 1 1, you are selecting bank 3. So can I say these two bits are used for the selection of register bank? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. Ha. So by default your rs0 and rs1 is they both are 0. By default both are 0. That is why by default we are dealing with register bank 0. लेकिन मुझे अगर दूसरे रजिस्टर्स यूज करने फ्रॉम अदर बैंक, in that case you have to set and reset the values of rs0 and rs1. Any question in this? Any question in this? No, sir. Okay, so we will proceed further. I think okay, I will take okay, I will finish it up. So we have left with the f0 flag, and yes, only one flag is left, that is f0. And regarding the f0 flag, this is, it is a general purpose flag. It can be used as a 1 bit memory location to record some event. So f0 can be used to store 1 bit of data. f0 is used to store 1 bit of data. So it is a general purpose flag. It is a general purpose flag. And your first bit, which is dash, which is not defined, it is reserved, may be used as a general purpose flag. So this is not defined, your first bit is also not defined. That means this can be reserved for some other purpose, which is a general purpose flag. Similarly, f0 is flag 0. This can be also used as general purpose flag. This is or can be used to store 1 bit of location. 1 bit आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. Okay, so depending upon आपका क्या requirement है, depending upon the instructions which you are dealing, you can store 1 bit in this flag f0. Any question in the PSW? Any question in the PSW? Program status word? Yes? Yes? Any question? No, sir. Okay. I think we can stop for today. So please revise this. I will be asking you the question. I need to ask you the question because मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो. Okay. So please revise. जो मैं एटलीस्ट जो मैं ले रहा हूँ उसको रिवाइज करो. Okay. See my videos. Try to understand. If you have question, please ask me in the next lecture. Okay. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आई विल बी रिपीटिंग इट. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम बाकी के आगे के लेक्चर्स नहीं ले सकते. सो कीप दैट थिंग इन माइंड. इज इट फाइन? Yes, sir. ओके. Yes. मनप्रीत हो गया? अटेंडेंस देखा हो गया कि आप चेक करो प्लीज. Yes, sir. हो गया ना? ठीक है. सो एवरीवन कैन लीव. थैंक यू सो मच. Thank Thank you, you, sir. sir. ओके. Thank you, sir. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बाय बाय. Thank you, sir.